So now it's a formal interview. Okay. So I have your CV. So before starting the interview, let me just introduce myself in front of you so that we can discuss very well. Okay. And so myself, Gaurav Kumar Mishra, and I'm a chartered accountant by profession. I'm working with one of the big four into this consulting department as a manager. And in terms of my journey, I have a journey of around more than 6.5 years. And yes, still, I'm loving this entire journey of my big four. Now I think now we can start. So I have your CV, and if you can please quickly run through your CV in next 2 minutes. No, sir. Myself, Ayushi Aggarwal. I am a dedicated person who aspires continuous learning and growth and development to have a meaningful impact within the organization. I have always been an academically inclined student, and I have graduated in economics honors from Kirolimal College, Delhi University. I've also cleared CA Foundation and CA Intergroup 1 and waiting for my CA Intergroup 2 results. As far as my internship experience is concerned, I have interned at Niti Aayog, where I worked under the project modeling agriculture demand and supply for 2047, and I was responsible for analyzing the current trends and where I prepared the model using calculating compound growth rate. I've also interned at Unschool as a sales and marketing intern, where I was awarded as the best intern of the month. Apart from this, I have also served as a joint secretary for RM organization where I worked on various social causes. And being part of a core team, I was responsible for leading 12 units from different colleges, consisting of more than 200 members. That experience had a very philanthropic impact on my life. Apart from all this, I've also been a part of economic society of my college, where I was a core member of a content and creative department and researched on various topics and made posts for the same. One of my blog on Korean economy got published in the society on the society website, and I hope my skills and positive behavior contribute to this organization. With thank you, sir. So I think it's quite very good journey of yours in terms of your education and professional. So what I can see that yes, you completed your education from CBSE board, and I think it's a very quite good marks and economic honors. Yes, it is my one of the favorite area economic because it is apart from the commerce background. So economics is going to be a very impactful in everyone's life. So it can be your personal economics, it can be something else. So I just want to understand that from the economics point of view, if you can just tell me something from the perspective of a very good example of economies of scale. Okay, just give me a minute to frame my answer. So basically, sir, economies of scale happens when you produce at a very large scale. So it leads to reduction in cost. So if we are producing at a factory level, so it will lead to economies of scale. But if you are producing at a at a small level, like in a shop, so its cost will be more than what you are producing at a factory. So basically, that is economies of scale. Okay, so if you're talking about that, yes, economies of scale means that you moreover more the production, lesser the cost, correct? Yes, sir. If so, now the thing is there are two parts, and the lesser the more the production, lesser the cost. So cost will always be having two component. One is the fixed component, second one is the variable component. So more the quantity you will produce, will your fixed cost will increase or your variable cost will increase? Sir, can you repeat, sir? My question is very simple. So as you rightly said that economies of scale works when you're going to produce at a mass level, correct? And you said that more the production, lesser the cost. Now my question is, if we are talking about the lesser the cost, so you are placed at a client place, okay, where you need to identify that yes, which cost you can reduce. So suppose a company which is manufacturing clothing, okay, so companies engage into the manufacturing of clothes.
My question is very simple, whether fixed cost is going to increase or variable cost is going to increase. The fixed cost will be same. Variable cost will increase. Okay, variable. So extra. For each extra unit, you are saying that ki your variable cost will increase. Fixed cost will same, whatever the capacity you will produce, correct? Yes, like for amount of production. After beyond a production level, we'll also need to product the increase the fixed cost to and incorporate all the production that is increasing. Okay. Can you link one of the, you understand market types? Yes, like Lot of competitive market. monopolistic. Yes. In India, which type of market as of now you can see? In India, it is currently like competitive only, so. So can you just give me example? See, competitive can be different shops which has been opened in your society. So that is again one of the competitive market. Okay, but now the thing is, let's take one example. Let's take an example of edtech industry. Okay, and Which industry? edtech education industry. I'm Okay. just taking example. So we are working for one of the client. So my question is very simple. That as of now, edtech industries are into the competitive market, or the market type is different. Sir, education industry is like we can see various kind of education industries in the market. So I would preferably say it is a competitive industry only. So Okay, because okay, many kind of tech firms are developing in our in this industry. So I would likely to say that competitive only. okay, okay. Now my question. So I think your accounts is quite good because if you got 95% marks, so I'll request other people to please, if you can mute yourself. Yes, not an issue. So now let's take one question. So it's a very simple question from your accounts. Okay. So the question is, you have purchased the goods on 1st of December 2023. You have purchased the goods worth rupees 1 lakh rupees from Mr. XYZ. To bring that material into the factory go down, you incurred cost INR 10,000 rupees. So आपका जो टोटल खर्चा हुआ कितना हुआ 1,10,000, करेक्ट. Now the second part is, as on 31st March 2023, 2024, sorry, you are going to prepare a balance sheet till 31st March 2024. Entire material is in the factory go down as it is. No consumption, no sales. Hope this is clear now. Like there is a total 1,10,000 stock in our go down, and there is no consumption and no selling. No selling. 31st मार्च 2024 तक मेरा गुड्स एज इट इज पड़ा रहा. अब वो Okay. गुड्स, अब जो भी गुड्स पड़ा रहा उसकी कुछ ना कुछ तो अकाउंटिंग होगी हमारी बुक्स में. ओके. In the foundation, we heard about trading account, we heard about P&L account, we heard about balance sheet, correct? We heard about something called as journal, we heard called as ledger, which is a second part of the journal entry. So my question is very simple. How, as an accountant, you are going to, or as an auditor, you are going to record these entire transactions in your books as on 1st December 2023, as on 31st March 2024. Sure, sir. So, for first on 1st December 2023, we purchased goods from XYZ Limited for 1 lakh rupees, right? So, its entry will be purchases account debit to XYZ account. That will be for 1 lakh rupees.
Also, we incurred 10,000 for like shipping and all, right? So either we can do a separate entry for this, or I would like to incorporate in that entry only. Purchase like purchase account debit from to XYZ account, 1,10,000 rupees, and then as there were no selling or consumption, I would ask likely to ask you what is the like depreciation rate. So there's no such a, my question is very simple. You have purchased of goods, not an asset. Okay, so Yes. okay, first March. I think we are lacking your voice. Yeah, Ayushi. Am I audible, sir? Yes, 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 please. Yes, that will be only purchase account debit to XYZ account, 1,10,000. And if you paid anything to XYZ, then XYZ to cash or bank account, 1 lakh account, 1 lakh. And shipping charges will be purchase account debit to a cash account, 10,000. बस दिसंबर का एंट्री वापस बताओ आप क्या होगी. Purchases account debit to XYZ account, that is we have purchased from XYZ, so we are crediting it. It will be 1,10,000 as I'm like compounding the entry of that like shipping cost. Yes, 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 So please. this will be the entry, and if we are paying in return to XYZ at 31st March 2024, then we will debit its account XYZ to cash 1 lakh account 1 lakh rupees and purchase to cash 10,000 rupees. Okay. And then what would be the accounting entry in 31st March 2024? Sir, there would be no such entry because there is no consumption or selling. Okay. So we have But same. uh, but uh, but uh, but the thing is, entire goods you have purchased, you have recorded one side of the transaction. What is the other side of the transaction? Just give me a minute, sir. So other side of the entry will be from stock side, like we have added to our closing stock as well. So it will be stock account debit to XYZ account, like for 1,10,000. बट एक बार तो आपने 1 दिसंबर को आपने XYZ को आपने क्रेडिट कर दिया, बट फिर वापस से आप XYZ को आप क्रेडिट कर रहे हो. हाउ इट इज? So stock to purchases it will be. स्टॉक टू परचेज, बट इससे तो आपका परचेज रिवर्स हो गया था. परचेज वैल्यू विल बी जीरो. सी, एक बार आपने परचेज डेबिट किया, एक बार आपने परचेज क्रेडिट करा, ठीक है, जो आपने अभी बोला. बट इस केस में तो आपका परचेज जो है जीरो हो गया. स्टॉक ठीक है, आपने स्टॉक किस वैल्यू पे दिखाओगे आप? Sorry.
स्टॉक को किस वैल्यू पे शो करोगे आप? 1,10,000. बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट, यू नो AS2? Yes, to accounting for inventory, right? उसमें क्या बोलता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सो यहाँ पे एनआरवी 0, तो स्टॉक आपका किस वैल्यू पे होगा? Cost पे होगा sir. Like it would be on cost only. Like we can't value Okay. it zero. Okay, no issue. So can you tell me something? You are aware about TDS, correct? TDS. Yes. Tax deducted at source. Yes, sir. Okay. So what is the point of taxation? या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सैलरी के ऊपर TDS कब कटता है? Sorry, sir. For this moment, I don't know this answer because I gave my CA Inter Group 1 in 2021. I didn't got time to revise these concepts for now. So, but I'll surely look into it after my interview. Okay. Okay. Uh, so in your CV, if I can see that in your skills and functional experiences, you have mentioned that you are proficient in MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint. Okay. So I just want to understand that out of 10, how you will rate yourself in MS Excel? Eight, sir. You will rate yourself 8. Okay. Do you know the concept of H lookup? So there are three type of lookup. Basically, VLOOKUP, H lookup, and X lookup. So when you will use VLOOKUP, when you will use H lookup, when you will use X lookup. HLOOKUP we will use when we are looking up for a value in a table in a row. And VLOOKUP we will use when we are looking for a value for in a column. What about H lookup HLOOKUP for rows. and X lookup? Sorry. X lookup. XLOOKUP is for overall table. When we are looking value for overall table. Okay. You know the concept of goal seek? Yes, when we are we want to find particular value, like maximum profit or something like that. Okay. But maximum profit cannot be derived through goal seek, no? The concept of goal seek is something different. I've done a little like question in Excel. So in that we wanted to like maximum profit for it. So we put the cell to that a formula for maximum profit, and then we wanted to that goal, like we want to maximize that goal. I use the goal seek only. Okay. So there's a concept in the goal seek. Okay. So
So I don't know whether you are aware or not. Suppose if you want to derive X value, and if you are having a 20 or 30 line items, you want to distribute all these value into such a manner that entire total will be equivalent to this value. Can you remember this? Suppose आपने बोला कि मेरे को 1500 की वैल्यू चाहिए. You put it the entire 1520 row items में. Either you put the numbers manually, कि ठीक है किसी में 350 किसी में 400 ऐसे करके डालोगे तो टोटल 1500 आना चाहिए. बट गोल सीक इज समथिंग लाइक आपने वैल्यू डिराइव क्या करना है और उसके अगेंस्ट में आपने अगर गोल सीक को प्लॉट करा, सो इन द 20 rows they will distribute the entire value. So that is the basic concept of the goal seek. See, that's not an issue. Okay. Now the thing is, I just wanted to understand how much you rate yourself in the PowerPoint. And can you just tell me some of the following concepts you did in your presentations, or you can say that in the Niti Ayog? Yeah, please. Basically, MS PowerPoint is like we used to make the slides and presentations which help us to visualize our work. And for it, when I made the presentation for Niti Ayog, I didn't use many special effects because used to be a simple presentation. But one thing I used was the templates. Templates helps to like formalize the PPT and fonts. When you are presenting your work, your font should be such that it is visible and it is clear, not too large, not too small, but it should be comprehensive enough for the people to understand that, and it should not be like cursive or other kind of font. It should be like simple font, and um, it should be like um, just a second, sir. Yes, so basically charts and all the diagrams should be of good format. Like if you are using you should have a good knowledge of the charts. Like in which type of data you should use which type of chart. So chart usually have a good impact on a presentation, and if a PPT is more like visual rather than written, like conceptual, it would be more attractive to the people who are you are presenting. Yeah. Uh, can you just tell me? So you forgot to tell you about your family background and your hobbies and all. I just wanted to understand from that perspective as well. So we are a family of four, and currently we are a family of four. I live with my mother, father, and my younger brother. My sister got married last year, and I live in Delhi. Uh, Born and brought in Delhi only, and uh, this is like about my family. And regarding my hobbies, um, I like in my free time I like to do some digital art, and also like I'm learning a little Spanish also. So Oh, okay. that's my. So Spanish you are learning from where? You are learning from college, or you are learning from some institute, or you are learning from YouTube, or how? No, I'm learning from Duolingo.
Duolingo. Okay. What is the purpose? Why? Means it was your hobby, or you just have a curiosity to learn the languages, or what? I just had a curiosity to learn a different language. Okay, that's nice. Uh, so I think it's done from my side, and my one more question is that in the last, why you join or why you want to join our firm rather than else? Because there are a lot of other firms are in the market who are doing pretty well than us, or who are the competitor of us. Why you want to join us? So basically, sir, your firm is a global leader, and it has a wider client base. And Yeah, please. and joining your firm would be your and working under your team would mean that I would be exposed to a comprehensive learning experience and exposure to various industries. So yes, I prefer your firm over others. That's why. Okay. So, Ayushi, I think it's done from my side, and it was nice to talk to you. And so you can ask if you have any questions, or if you want anything you want to know from me about my firm or something else, or what's your expectation, you can ask. Okay, so like if you would like me to rate my interview, how do you rate this, or any improvement I need to make? Yeah. So Ayushi, so I think I'll give your feedback to HR. Okay. But yes, definitely it's overall good. But what are the feedback is there from the technical perspective, from the communication skill perspective, from the resume perspective? I'll definitely tell it to HR, and HR will definitely get back to you. Thanks. Thanks, Ayushi. Thank you, sir. Okay. So Ayushi, so let me just tell you the feedback. So can you please switch on your camera? I'll request other people who have joined or who is listening to please switch on the camera. I think you might learn something from this particular interview. So Divya, Yubika, Disha, if you are there, you can please switch on your camera. Okay, otherwise that's not an issue. So Ayushi, in terms of your communication skill, if I tell about, that is quite good. Your confidence level is good. You don't need to be worried about that. Okay. So इस चीज के लिए आप एकदम फ्री रहो. ड्रेसिंग सेंस यस डेफिनेटली दैट्स इट्स गुड. इसका कोई कोई मतलब इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है. एंड यस एक चीजें थी जब आप अपना रेज्यूमे किसी को रन थ्रू कराते हो तो एक चीज याद रखना कि पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट योर और हियर अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड एज वेल. ठीक है. सी Uh, टू लाइक. Sorry, sir. I lost my connection. ओके दैट्स नॉट एन इशू. श्योर. Sir. सी आई Can एम you सेइंग repeat दैट. after the dressing? Yes. Yes, I'm saying that ki when you are briefing your resume to any of the interviewer, if I say about 2 minutes, it means 2 or 3 minutes. It can be extended, but it not be too lengthy. Please keep this into mind. Okay. So you did lot of things. That's why you are able to explain. But otherwise also, ठीक है. तो जब आप रिज्यूमे अपने बारे में बताते हो तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ, अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ. मीन्स व्हाट अबाउट योर फादर, अबाउट योर फैमिली. Okay, and from which place you're belonging, then your educational background, then your ग्रेजुएशन इफ यू आर डूइंग तो उसको बताओ. फिर उसके बाद अगर आपने कुछ अलग किया जैसे आपने नीति आयोग में इंटर्नशिप करी ये सब बताओ. उसके बाद आप अपनी हॉबीज बताओ. ठीक है. एंड वन मोर थिंग व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट योर हॉबीज, सी मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर विल ऑलवेज लिसन कि ठीक है यार ये तो मतलब पढ़ाकू है, ठीक है सब कुछ है, ये इसको आता है. बट व्हाट इज एक्स्ट्रा, व्हाट इज समथिंग एक्स्ट्रा. एक होता है ना कि पीपल इन द टीम दे आर नॉट रेडी टू ज्वेल, और ऐसा किसी भी इंटरव्यू को नहीं चाहिए होता है. सो यू से समथिंग विच यू आर वेरी गुड. तो ये चीजें हैं. कम्युनिकेशन वाइज यू आर गुड, कॉन्फिडेंस वाइज यू आर गुड.
And the third part, fourth part is when you are communicating with the interviewer. जैसे आप मेरे इंटरव्यू में ना 2-3 बार आप 4 बार नीचे देख रहे थे, ठीक है, and it was seeing something like that you are searching on the laptop or something like this. So हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सी होता क्या है ना कि अभी से अकाउंटिंग एंट्री था तो इट वाज जेन्यून कि आपको करना ही था, एंड इट शोस दैट यू आर अप्लाइंग योर थॉट प्रोसेस, ठीक है ना। अदरवाइज यू कैन थिंक, यू कैन सी, सो बाय सीइंग द फेस ऑफ द इंटरव्यूअर आप आई टू आई कांटेक्ट बना के रखो। नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली बोलो उसको कि ठीक है यार, जैसे आपने क्वेश्चन बोला कि ठीक है, अलाउ मी फॉर अ मिनट टू रीथिंक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड किसी भी क्वेश्चन का ना तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना है कि आपने अभी पढ़ा नहीं है। सी टीडीएस इज सब वेरी सिंपल, एंड जब आप आईपीसीसी दे के आए हुए होते हो तो यार ये इतनी चीजें तो आती ही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फ्रॉम द टेक्निकल स्किल आई से दैट नॉट मोर, या द क्वेश्चन व्हाट आई हैव आस्क्ड इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। I'll post the answer on the group as well. But I'll expect that people will post their answer, what they are thinking about this. And the next part is you should brush up your technical little bit from the amendment perspective कि टैक्स में जो जो भी अमेंडमेंट आए हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको स्टार्ट ऑडिट में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट्स के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ब्रश अप करके रखो अपने आप को कि शेड्यूल 6 में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, नहीं होते। पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड बी वेरी स्मार्ट इनफ, बट पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। आप ये कर लो, एंड आई थिंक इट्स डन फ्रॉम योर साइड, मतलब मेरी साइड से हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन था कि मतलब व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन और व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर फर्म। सी, ये आंसर सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक आंसर नहीं है। सो व्हाट एवर द बेस्ट, सिंपली बोल सकते हो कि आई थॉट दैट, जो आपने बोला ना अभी कि यस फर्म इज हैविंग अ मार्केट लीडरशिप और समथिंग लाइक दिस, दैट्स व्हाई यू वांट टू जॉइन, तो दैट्स नॉट एन इशू। इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी बोल सकता है कि ठीक है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो ये भी हो सकता है, करेक्ट ना। देन यू कैन डेफिनेटली से इफ आई फील दैट वॉट एवर द फीडबैक इज देयर, इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी देन डेफिनेटली आई be more passionate to work or more passionate to learn. If I'll not get the opportunity, I'll definitely look for some other opportunity. ठीक है, so there is nothing harm in that. तो अपना थोड़ा सा खाली अपना टेक्निकल आप एक ब्रशअप कर लो, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत है। Okay, sir. I'll definitely work on that. Thank you for your सो response, sir. आई थिंक मतलब केवल आपको थोड़ा थोड़ा ब्रशअप करना है, सी आपको लॉ नहीं पढ़ना है यार इतना, बट आपको थोड़ा सा अकाउंट्स में ब्रशअप करना है, थोड़ा सा आपको टैक्सेशन में ब्रशअप करना है, थोड़ा सा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में ब्रशअप करना है, और कुछ नहीं करना है। मैं पूछ सकता था कि ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड कौन सा है, वो क्या बोलता है, सैम्पलिंग का क्या बोलता है। सी अल्टीमेटली थियरी तो बतानी है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड नो हाउ टू डू सैम्पलिंग। सो बस इतना ही है मेरी साइड से, एंड आई थिंक मतलब वॉट एवर द और भी कुछ क्वेश्चन है डेफिनेटली यू कैन आस्क, बट अदरवाइज इट्स डन फ्रॉम माई साइड। Okay, so sir, just one question. Like if I'm applying for statutory audit domain, so what technical questions I'm expected to मैं आपको एक चीज बता दूं that? आयुषी, there will be a lot of people who will be telling that these are the 20 or 30 or 40 questions, ठीक है ना। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक, कुछ भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर आप सी, यस, द थिंग इज कि एक सो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए आप कर रहे हो तो आपको बैलेंस शीट्स के अराउंड काफी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कारो आपने पढ़ा हुआ ही होता है, कारो आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट में। Sorry, sir, I lost my connection. You were saying like you have to have a knowledge of around the balance sheet items.
मैं क्या बोलूँ, अगर आप स्टैट ऑडिट में आते हो ना, तो आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसे 500 सीरीज जरूर पढ़ के जाइयो, ठीक है ना। उससे पूछ लेते हैं, बिकॉज वो थ्योरेटिकल है। और बैलेंस शीट्स के अराउंड आपको चीजें पता होना चाहिए कि नॉन करेंट एसेट क्या होता है, करेंट एसेट क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, क्या डिफरेंस, प्रोविजंस एंड कंटिजेंट, कंटिजेंट को उसमें लाइबिलिटी में उसमें कब दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। इतनी चीज बहुत, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी यू आर अ फ्रेशर एंड आई एम नॉट हियर टू एक्सपेक्ट दैट आपको पता होना चाहिए कि अगर एफडी 12 महीने में मेच्योर हो रही है तो मेरे को दिखाना है करंट में कि नॉन करंट में। ये बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, बट इंटरमीडिएट में इतने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं कि मेरा जो मेच्योरिटी डेट से कैलकुलेट होगा 12 मंथ, या कहाँ से कैलकुलेट होगा, कि रिपोर्टिंग डेट से कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। सो आपको एक ओवरऑल व्यू पता होना चाहिए। एंड एक चीज याद रखो यार, 10 में से 8 इंटरव्यू, और आप 2 ही इंटरव्यू होंगे या 3 इंटरव्यू, 30% इंटरव्यू ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा स्क्रू करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज 70% दे विल एक्सपेक्ट कि हाँ यार इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, टेक्निकल में अगर आप एवरेज भी करते हो तो आई थिंक दैट्स गुड। Okay, sir. Thank you. So nowhere it is the requirement that you should be the expert. एंड एक चीज याद रखो कि उसी आप अपने कलीग से जो जो इंटरव्यू दे के आया हुआ था ना, आप उससे बात कर सकते हो कि क्या तुमसे पूछा। बट ऐसा नहीं है कि उससे पूछा तो सारे क्वेश्चंस वही होंगे, इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन तुम्हारे मैच भी नहीं करेंगे। अभी जैसे मैंने आपसे जो इंटरव्यू मैंने क्वेश्चन पूछा अकाउंट्स का, इवन आई आस्क व्हेन आई टेक द इंटरव्यू ऑफ द सीए फ्रेशर आल्सो, तो मैं यही अकाउंटिंग एंट्री से उसको टेस्ट करना चालू करता हूँ। बिकॉज मेरे को तो देखना है ना कि सामने वाले का अकाउंटिंग स्किल कितना अच्छा है, इफ आई एम टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ सीए फ्रेशर। बट अगर मैं आर्टिकल्स की बात करता हूँ तो मैं ओवरऑल सब पे लेता हूँ, टीडीएस पे क्या है, तुम्हारा अकाउंट्स कैसा है, नहीं है। इट इज समथिंग लाइक दिस। ओवरऑल इट्स अ गुड, I'll rate it's a 7.5 to 8 in between that. Thank you, sir. Thanks, and hope I'll be able to give the correct feedback. Okay, and you can definitely connect us whenever you need. Anyone else who want to ask any question? सर Yes, हाँ दिशा बोलो ना। सर जैसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं कहीं डोमेन स्पेसिफिक भी होते हैं। सो दिशा द थिंग इज कि अगर आप स्पेसिफिक डोमेन के लिए अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली वो हो जाते हैं थोड़े से स्पेसिफिक, ठीक है। बट टैक्सेशन वाला जो बंदा है वो अकाउंट्स नहीं पूछेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, because somehow it will also impact your accounting part of you. बट टैक्स अगर सपोज आप जीएसटी में जाओगे तो जीएसटी का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग पूछेगा। अगर आप डायरेक्ट टैक्स में जाते हो तो आपसे टीडीएस के बारे में पूछेगा, देन आपकी पीजीबीपी में कैसे चार्जिंग होती है नहीं होती है, देन आपका स्लैब पूछेगा, अरियर्स के बारे में पूछ सकता है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, नॉट अ वेरी हाई वन टू थिंक कि नोटिस अगर इशू हो गया तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, 142 में नोटिस कैसे आता है, 143 में कैसे आता है, इट इज। बट एक चीज याद रखो कि मैं आपको बताता हूँ कि बिग फोर में, विच नॉर्मली आई यूज टू टेल इन माई सेशन, बट यहाँ भी मैं बताता हूँ कि नॉर्मली 3 डोमेन में वैकेंसीज ज्यादा होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट में, फिर इंटरनल में, फिर बची कुची जो होती है वो टैक्स में। एंड उसके बाद भी जो बची कुची होती है जो बहुत, मतलब रेयरेस्ट यू कैन से दैट 4 और 5%, वो एमएनडे डील्स इन सब में जाती है। एंड वहां पे तो प्रेफरेंस होते हैं रैंकर के और गुड मार्क्स ऑफ एंड बोथ ग्रुप पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, समथिंग लाइक दैट्स। ओके सर, एंड सर वन मोर थिंग कि जैसे अगर मेरे को टैक्स के लिए अप्लाई करना है, सो मेरे कहीं ना कहीं टैक्सेशन के मार्क्स मैटर करेंगे जो इंटर में आए हैं कि अगर मैं टेक्निकल अच्छा परफॉर्म कर दूं इंटरव्यू में तो वो कवर नहीं हो यार, जाए। ऐसा कुछ नहीं है। सी आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आपके टैक्सेशन में एग्जाम्पशन होना चाहिए। ओके मतलब सर, थैंक मतलब अगर किसी ने आपको ये बोला कि आपके टैक्स में 80 होंगे तो इंटरव्यू होगा, तो भाई भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इवन सीए में अगर आपने 60 मार्क्स भी लाया ना टैक्स में, और टेक्निकल आप अच्छा कर जाते हो, तो इट्स फार बेटर। सी एग्जाम इज योर अबाउट योर बुकिश नॉलेज। एक चीज याद रखो, एग्जाम में आपको 80 मार्क्स इसलिए आए क्योंकि आपको उस टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर थे आप उसको अच्छे से सॉल्व करने में आगे निकल गए, अदरवाइज कुछ नहीं। यू। ओके सर, थैंक यू। यस। Sir, I also wanted to ask one question. या युबिका, टेल मी। Sir, like if I am applying for statutory audit, so my tax knowledge should be up to the mark for that interview also, like, or should the basic knowledge will do? समझा नहीं, वापस से पूछोगे क्या?
सॉरी सर। वापस से रिपीट करो ना प्लीज। सर अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है मैंने, तो मेरा टैक्स का भी नॉलेज एकदम अप टू द मार्क होना चाहिए कि एक डिसेंट बेसिक नॉलेज विल हेल्प? एक चीज याद रखो यार, मतलब मैं पता नहीं, मैं ये क्वेश्चंस मेरे को बार बार आते हैं, बट एक चीज मैं सबको बोलूंगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, interviewer will never expect you to be an expert at a articleship level. They expect a expert level when you are a chartered accountant. तो आपको सारी चीजों के बारे में ना बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जैसे मैंने बोला टीडीएस ऑन सैलरी कभी कटता है, तो आपको होना चाहिए कि हाँ टीडीएस ऑन सैलरी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। रेंट के केस में कभी कटना चाहिए, इंटरेस्ट के केस में कभी कटना चाहिए, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बट अगर आप पूछोगे मेरे से एक्सपर्टीज नॉलेज, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है यार। मतलब मैं अगर आपसे इंटरमीडिएट में एक्सपर्ट एक्सपेक्ट करूंगा तो फिर आर्टिकलशिप किस बात का। बट ओके आपको सर। एक डिसेंट नॉलेज होना चाहिए। अब आपको ये शेड्यूल 6 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है वो पता होना चाहिए। करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके सर। बैलेंस शीट में सारे अकाउंट नॉमिनल और रियल होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। हाँ जी। So I think no one else have any questions, so I think it's done from my side. So I think we can conclude here. And if you are still having any question, you can definitely post. Ayushi, if you are in that group, correct? ABC batch 2 में आप उसमें added हो ना? Yes, sir. तो definitely अगर आप किसी को कोई भी question, definitely you people can ask over there, and we will be happy to answer your questions. And again, it is my request that यार अभी नया साल आ रहा है, enjoy करो आप लोग। 31st पार्टी करनी है, पार्टी करने जाओ, कि रिजल्ट आएंगे 7 या 8 तारीख के आसपास रिजल्ट आएगा, बिकॉज 6 तक तो आपके फाउंडेशन के एग्जाम ही चल रहा है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं यार, ठीक है ना, सबका कहीं ना कहीं अच्छी जगह होगा। एंड नहीं होगा तो यार बाकी तो और भी सोल्यूशन है ना, अगर किसी के पास बिग 4 नहीं हुआ तो बिग 6 में होगा, बिग 6 में नहीं हुआ तो बिग 10 में होगा। बट इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट लाइक दैट कि बिग 4 में नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ काम खत्म हो गया। ऐसा किसी को सोचना नहीं है, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, एकदम जबरदस्त वाला नया साल है। पुराने साल में जो तुमने सोचा है पुराना, वो सारी चीजें क्लोज करो 31st को, फर्स्ट से वापस से नया सोचो, नया इंस्पिरेशन लेकर के आओ। एंड बस आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, अच्छे से पढ़ाई करो, आर्टिकलशिप के लिए अच्छे से तैयारी करो, किसी अच्छी फर्म में जाना है बस, और कुछ नहीं। सो थैंक्स, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2 days in advance. Happy New Year to you, sir. बाय थैंक बाय। यू सर। चलो बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir.